have Subhash Ghai on the house. Let's see what he has to say. In cinema, when I started acting, writing, direction, producing, and then education at my research film school in North area, 1100 students in media and entertainment. And I'm happy now we're filmmakers to make films. So journey has been quite joyful and with a lot of challenges, a lot of struggles. But I remember I want to point out here in this occasion is when I had money in 1990s. I had an experience, I reached 12 universities. And it was not a money, it's what to do with money. Give. इस पैसे का क्या करूँगा? तो मेरे ऑफिस में, in my office there were a lot of newcomers going in. The talent, actors, writers, singers. He said, you have given an opportunity to so many stars. You have produced so many stars as a choreographer, as a director, and a director. Why don't you give us a chance? And they were all boys and girls who are from different states, from Bihar, from Northeast. And they said, we do not know anyone in Bombay, sir. I said, because I make a film in one film in 2 years. I cannot do all of your chances. And that time I remember I met Mr. Reemana, he was my favorite actor and friend. And I asked him, should I open a studio? A film studio like Rajkapoor studio, like Gurudhar studio, or should I open a film studio? He said, film studio. You should work on it. Subhash. Because you like new talent, you like new young kids to go. And from there I started my work on opening one of the finest film schools or media schools in India. I went abroad and visited 32 film schools from Europe to Japan to America, every country. And I did my research work, and I was surprised to see one thing which I never knew. I was educated like a kid, and ordinary pass marks. I used to ask myself, if the whole examination is based on 6 questions in a year, why should I study whole year? I will ask it, and I will have a pass marks. There is no need to study in a study. Pass होने का मतलब. So that time I realized in America that they have started, they educate their children about media and entertainment sector from the class of fifth standard. From 5th standard, students have to take one option subject, either sports, and we didn't have. You could never think of it. And that time I came to know that we are living on a memory-based education in India. When they are developing, they are doing skill-based education. So I understand the difference between these two. I'm talking about journey, how I got this. And then I came back again to the city and to various government. And I told them, listen, sir, we should develop a skill-based education. Thank you. I was from FTI, fine. Yeah. And then I designed the whole course of my film university across best of the people, best of the directors. They designed the courses for me. And we worked very hard for 5 years
to design the courses and the funding of students and water and bricks, which was make a vision to educate your children right from their toddler age, right from when they are kids, newly born, you can see the newly born kids is attracted to certain toys of science, toys of wonder toys. And you come to know within 3 years, but then we used courses, no education. So it was important for us that we could interact with each other, and I developed the whole thing in 2006 when I started listening books with 80 students. Today we have 1100 students, and we have 3,700 students working in India. Now, whenever I go to any studio, I find my students there, and 4,000 students working in the media companies. It's a huge joy for anyone. And what we did was, what I get the compliment, best compliment from their bosses and students, that they are very good. The most important is they are very humble. They are learner. They feel they are still students. They are not masters. And that is the best quality from medicine students to medicine progress. So that is called the soft side of an artist or a technician when you develop. That is very, very important that you profess, that you infuse the philosophy of human development first in him. He has to be a good artist to be a good technician or a craftsman. And when these things happen together, then you see the country develops with a different generation. One of the generations like us, we have nothing. We have to think tomorrow generation how we can go further. And I'm very happy initiatives like this are here in fact further. And 1970 to 2010 was again a remarkable year. In 2015, many education policies. In 2022, all the skill education, I have been a chairman of India Engineering Skill Council under the Skill Ministry. And I remember that we had a lovely time in the student, and they have progressed so much today that I feel like to be a big clap for that. Thank you very much. I don't think I should speak too long. Neither do I tell them. No, thank you. Audience would love to understand, want to know very want to take it. After spreading simple how hard we need to check it out. ये सब दूसरी बातें हैं, but सब बातें experience के बाद I can tell you one thing. Most importantly, that look at your small kid of your country, of your family, of your society, and think of it once. How much you can contribute in developing his taste or his skill, his art, hidden. Don't force any education. Don't give him a forced education. Give him love. Feed him. Ask him questions. Today is a day when education has to be in interactive class. Interactive, not a classroom. एक आदमी बोल रहे हैं 40 सुन रहे हैं. अभी एक एजुकेशन है कि मैं बच्चों को पूछता हूँ आप कितना जानते हैं, आप मुझे बताइए. So interaction is one of the most important things today in education. A style change will happen because children are much ahead than us. There are 3 generations ahead of us because of the digital revolution. We must accept it. But ask them to be creative, more skilled. Help them, support them. Don't force them. Ask them what they need, we are there. That's my conversation. To every establishment, every organization, see that how can you help them in developing themselves. Yes. Thank you. Shri Subhash Bharati, ladies and gentlemen. So it's always so insightful listening to you. Thank you so much. Next,
I call upon Shri Atul Kumar Tiwari, the Honorable Secretary of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, for an inaugural address. His leadership and guidance in skill development is pivotal in shaping the future workforce of the media and entertainment sector, and his address will undoubtedly shed light on the importance of fostering talent and innovation. Over to you, sir. Good morning to everyone. Aditya Subhash Gai. Sir, this is how we start in our government. That is the Sambodhan हम करते हैं. तो आपको बहुत बहुत नमस्कार. Miss Hande Arshad, I hope I am pronouncing your name properly, madam. आशीष जी, मुंजाल जी, शैलेश जी और इस सभा में उपस्थित सारे गणमान्य अतिथिगण स्टूडेंट्स, मैं सर्वप्रथम अपने माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी की आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो आज इस समारोह में उपस्थित रह सकते थे पर किसी कारणवश आज यहाँ पे नहीं है। इन दोनों मंत्रियों के सामने हमने मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के बारे में और स्किल के लिए काफ़ी चर्चा की है, और वो भी इस भावना से अभिभूत है कि मीडिया एंटरटेनमेंट जो हमारा जो सेक्टर है वो जिस फिनोमिनल रीति से आगे बढ़ रहा है, इससे हमारे स्किलिंग की अपार संभावनाएं हैं, और स्किलिंग के साथ जोड़कर कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन 2047 का है, जिसमें हम एक उन्नत राष्ट्र बनना चाहते हैं, उसमें स्किलिंग और मीडिया एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। Having said that, I would like to say that I have worked in the INB ministry earlier, and now I am privileged to work in the skill development. And I have seen the media entertainment from both sides, from the regulated side as well as from the development side. And I must admit that nothing is more creative than making a film like what Mr. Green has made, so many memorable films. Because ये पूरी सारी हमारी विधाओं का एक संगम है, जिसमें स्टोरी टेलिंग भी है, संवाद भी है, संगीत भी है, भावनाएं भी हैं, नृत्य भी है, और अंत में एक सुंदर एंटरटेनमेंट भी। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मीडिया एंटरटेनमेंट से संबंधित फिकी फ्रेंड्स में मुझे आने का अवसर मिला और आपके साथ कुछ विचार साझा करने का एक मौका मिला। फिकी फ्रेंड्स में आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसा मुझे बताया गया कि जो लीप है, जो लीप का मतलब है लिवरेजिंग एजुकेशन टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस, और जिसके बारे में वेरी हार्ट वार्मिंग डिस्क्रिप्शन जो श्री सुभाष घई जी ने दिया। ये सबसे ये प्रतीत होता है कि हम कैसे स्किल के बारे में, मीडिया एंटरटेनमेंट के बारे में जो स्किल गैप्स उसको हम भरें, कैसे इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्किल इंस्टीट्यूशंस को और बच्चों को साथ लेकर आएँ, कैसे हम मीडिया एंटरटेनमेंट के बारे में, इसकी संभावनाओं के बारे में, पोटेंशियल के बारे में लोगों को सेंसिटाइज करें, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एरिया में आने के लिए प्रेरित हों। जैसा आपको पता ही है कि मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर हमारे देश के सारे सेक्टरों में काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ से बढ़ रहा है, जिसकी CAGR जो लगभग 13% मानी जाती है, जिसमें 30 लाख लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं और लगभग 55 लाख लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं, और इसकी जो रेवेन्यू 2017 में लगभग $303 बिलियन की होने की ऐसी उम्मीद की जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया एंटरटेनमेंट जो एक सेक्टर है हमारे गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम स्किलिंग और एजुकेशन को साथ लेके जाएँ तो हमें निस्संदेह
हमारे युवा पीढ़ी के लिए एम्प्लॉयमेंट और एक गरिमायुक्त भविष्य बनाने में हमें आसानी होगी। मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में अभी आज के दिनों में काफ़ी फेनोमेनल शिफ्ट हुई है, चाहे वो आप डिजिटल के लिए लें, 5G जिस तरह से हमारे देश में फैला है, जिस तरह से हमारी कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुए, जिसका उल्लेख शैलेश पाठक जी कर रहे थे, और जो आज की कंज्यूमर सर्वे रिपोर्ट में भी निकल के आया कि कैसे हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग ज़्यादा टीवी खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं और उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और जो कंटेंट क्रिएशन में जो OTT या अन्य माध्यम में जो एक डायनामिज्म जो आया है, उससे पूरे, और अभी हाल में हमने जो एक मैसिव मर्जर के बारे में हमने जो सुना है, इन सब चीज़ों से मीडिया एंटरटेनमेंट इज बजिंग विद एक्टिविटी, और आफ्टर कोविड इट इज अगेन गोन बैक ग्रेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। और इसका सबसे एक महत्वपूर्ण काम हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए ये भी है, अदर देन being a significant contribution to GDP, कि हम ये टूरिज्म को प्रमोट करता है, हमारी कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाता है, और अल्टीमेटली देश के लिए एक सॉफ्ट पावर का भी निर्माण करता है, जो पूरे विश्व में इसकी महिमा बढ़ी है और इसके बारे में लोगों का आकर्षण बढ़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया एंटरटेनमेंट को सरकार की ओर से सभी तरीके की पूरी तरह सपोर्ट दिए जाए, ताकि वो एक GDP भी क्रिएट करे और देश के बारे में जो छवि पूरे विश्व में है उसको भी परिष्कृत करे। जैसा आपको भी बताया गया, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, जैसा सुभाष घई साहब बता रहे थे, शायद उनके ही रिकमेंडेशन का नतीजा होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से जो स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्किल करने के बारे में करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं, जिसे कक्षा 6 से 8 तक कैसे स्किल सब्जेक्ट लेके आया जाए, उनके बारे में, वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में बात हो। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में स्किल सब्जेक्ट ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट बने, ताकि बच्चों को स्किल के बारे में, स्किल एजुकेशन के बारे में उनको बताया जाए। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, जैसा वो भी कह रहे थे, कि कैसे मीडिया एंटरटेनमेंट की जो स्किल्स हैं उसको हम एजुकेशन के साथ फॉर्मलाइज करें। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से, जिसमें जो तमाम हमारे टेक्नीशियंस और अदर लोग जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको अगर हम अपस्किलिंग करते हुए सर्टिफाई करेंगे तो ये उनके भी कैरियर पैथवेज बनाने में, फर्दर स्किल करने में, रिकॉग्निशन देने में आसानी होगी। अभी तक मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर के स्पॉन्सर के माध्यम से हमारे पास, हमने AVGC पॉलिसी की मंत्रालय ने मिलकर बनाई, एजुकेशन, IND मिनिस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट। मीडिया एंटरटेनमेंट की पॉलिसी भी बनी है, स्किल गैप भी तैयार किया गया है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक चीज़ को स्किल लेंस के माध्यम से देखने की व्यवस्था की जाए। मुझे बताने में काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारे पास, जैसे हाल में मैं उड़ीसा में सुदूर संबलपुर जिले में गया था, वहाँ पे हमने जो स्किलिंग सेंटर बनाया, उसके अंतर्गत भी हमारे AVGC मीडिया एंटरटेनमेंट से संबंधित जॉब लॉस की स्किलिंग की जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि न ही बड़े शहर, बल्कि Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ के लिए भी हम लोगों को, मीडिया एंटरटेनमेंट वाले लोग उन्मुख हो रहे हैं, और उनको ये दिख रहा है कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकें। मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से CBSE के साथ, हायर एजुकेशन के साथ बहुत सारी कोर्सेज स्कूल में चलाए थे, जिसका मैं कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। वो चाहे एनिमेशन हो, टेक्सचरिंग हो, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हो, मास मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड, फोटोग्राफी, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग कोर्सेज। हायर एजुकेशन में जो डिग्री और डिप्लोमा चल रही हैं, वो गेम डिज़ाइन के बारे में, एनिमेशन एंड VFX के बारे में, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, फिल्म मेकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट। अगर हम डिप्लोमास की बात करें तो एनिमेशन, VFX, गेम आर्ट एंड डिज़ाइन, इवेंट मैनेजमेंट एंड अदर सच कोर्सेज के बारे में काफ़ी लोगों का विस्तार बढ़ा है, और बहुत सारी संस्थाएं, ट्रेनिंग संस्थाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को हम इस तरह के कोर्सेज देकर मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ हम तैयार करते हैं।
हमारे पास उल्लेख देने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों को हमने स्किलिंग की है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम आगे कैसे बढ़ें। हमें अगर आगे बढ़ना है तो पहली बात है कि स्किल के बारे में लोगों को महत्व पता चले। और मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और सरकार की तमाम नीतियों में स्किल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आ रहा है, और ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी दे आर रिकॉग्नाइजिंग that skilling is going to be a game changer for our country. As our country's demography changes, we have the youngest population in the world, largest number of working age population, and if we are able to skill them, then certainly it will lead to a great deal of enhancement in productivity and employment as well as competitiveness. हमें जरूरी है कि हम जो रास्ता हमने फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्किल्स को एजुकेशन के साथ लेकर चल रहे हैं उसको और आगे बढ़ाया जाए। हमें ज़रूरी है कि इंडस्ट्री, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ें, और ताकि हमें उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप देने के लिए, इंटर्नशिप देने के लिए हमें सहायता हो। हम चाहेंगे कुछ संस्थाएं हमारे साथ जुड़ें ताकि हम अपने जो स्किल इंडिया डिजिटल हब, जो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है जिसका हमने स्टॉल आपके सामने बाहर स्टॉल में लगाया हुआ है, मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, सभी ने आग्रह करूँगा कि आप अपने मोबाइल में जाके उस ऐप को आप डाउनलोड करें। हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री को अपनी सारी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको उस पर हमारे साथ आके जुड़े, साझा करें, ताकि ज़्यादा संख्या में युवा पीढ़ी उस कोर्सेज का फ़ायदा उठा पाए। और जो हमारी स्किल लेंस जो रिपोर्ट इन्होंने मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल ने जारी की है, और जिस तरह से हमने 3 मंत्रालय के साथ मिलकर स्किलिंग के लिए एजुकेशन के साथ मिला के हमने जो वर्क प्लान तैयार किया है, उन तमाम पहलुओं को इस तरह से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ज़रूरी जैसा है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करें, जिसमें नेकार्ड की चर्चा की गई है, और उस नेकार्ड को हम कैसे इंटीग्रेट करते हुए, जैसा भाई साहब बता रहे थे, बच्चों को शुरू से ही पता चलना चाहिए कि उसकी आर्टिस्टिक की डायरेक्शंस क्या हैं और किस दिशा की ओर बढ़ सकता है, ताकि हम एक मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक रिस्पेक्टिविटी दे सकें, एक फॉर्मलाइजेशन दे सकें, एक डिग्निटी दे सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर पर आकर्षित हो पाए। और मैं मंत्रालय की ओर से आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम पूरी तरह से मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल हमारे बहुत प्रायोरिटी सेक्टर है, और इसमें अगर करिकुलम के बारे में, सेंटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, MOU के बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में हमने काफ़ी काम किया है, और हम और भी आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। और मैं चाहूँगा कि जो विकी फ्रेम के माध्यम से लीप के बारे में जो चर्चा हो रही है, इसको हम और पैना करें और डीपन करें, और हम एकेडमी इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसमें और भी हम काम करें, ताकि हमें आने वाली पीढ़ी को मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए और कैरियर के लिए रास्ता मिल सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, Mr. Atul Kumar Tiwari ji, for such an insightful speech on the importance of fostering talent and innovation in media and entertainment. This, I would like to request Ms. Hande to leave for the briefing of the next session. She will join us back in 20 minutes for the next session with Ayushman Khurrana. Thank you. Lastly, I would invite Mr. Ashish Kulkarni, Chairman of FICCI, AVGCXR Forum and founder of Punar Yug, to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. Thank you very much. A very good morning to all of you. Aranya, Subhashi and my guru, it gives me a great pleasure in thanking you for all the way coming here and sharing your wisdom with us. We had many opportunities to listen to you, but let me tell you, people are talking about artificial intelligence, they're talking about overhyping artificial intelligence, but what they're not aware that you are one of the finest guys of emotional intelligence, which is impacting people. And your storytelling had been binding them and emotionally binding them till the story is complete and keeps them thinking that the stories remain with them for their lives. And big thank you to you for coming here all the way.
अतुल जी, मैं आपका क्या कहूँ, इनफैक्ट our industry actually is blessed to have you for the last 7 years with us. When you came to IMD industry, what a support we had. We started the initiative of national AVDC policy under your leadership, and your support continued. And now we are seeing the complete education and skilling ecosystem, which is under your guidance, the way we have been able to do it into MESC, Media and Industry Council, which was also incubated in FICCI in 2012, has seen bigger heights. And we have been able to really see that the media and entertainment education today is at par with science and commerce. And that's the biggest blessing that we have got through National Education Policy. Big thank you to our Prime Minister for giving us the National Education Policy and the Skilling Ministry, which has changed the complete landscape of education and brought creative and design education at par with science and commerce. Mr. S.K. Pathak ji, under your leadership since last 1 year, we have been able to see a fabulous growth into our endeavors at 50 frames, as well as every single effort that we do under the media and entertainment and AVDC in particular. And your support from the top has been unprecedented. And between the last 50 frames, that was your first 50 frames, and today we have seen a remarkable change. And we hope the next year that we have the Silver Jubilee, it will be much, much bigger. And we would be able to do something unprecedented next year as well. And Munjal, you've been by my side all the time. We have all worked together as colleagues. Big thank you to you for standing by. All the vice chancellors who have come today, and all the directors of the schools, and the complete skilling and education ecosystem who have been with us today, particularly for the LEAD program, and all the students and the industry professionals, big thank you to you for coming here today and deliberating on the future of education and skilling in our industry, which was into a bad state because we were not recognized into the school education and somewhere in the higher education. But this is the time for us to build our foundation and take a big leap in storytelling in all formats. And all the crew members and all the people who have put up a stall, please make the most of it. Today is the last day. Last 2 days were fabulous, and we had amazing brainstorming sessions and amazing discourses by people who are very well experienced into our industry. Even today we are going to see that. Ask the right questions and empower yourself with all the knowledge that you can gather today. Big thank you for all of you who have come here, and all the people who are in the organizing committee with Leena's team and the complete crew members. Big thank you to you for standing by and making sure that you are making life easy for all of us. Thank you so much. Enjoy the last day of 50 frames and the evening. Thanks so much. Ladies and gentlemen, can we please have a big round of applause for Mr. Ashish Kulkarni and also all our dignitaries present here. Thank you so much. Yeah. Very soon we proceed with our next session, and meanwhile parallel sessions are